Hello everyone, welcome to day 9. Uh, Next question is maximum consecutive ones. I will do it on lead code. Okay. So given a binary array nums, return the maximum number of consecutive ones in the array. Basically, we want the maximum window size where ones are present. Okay. So for that, what we can do is in this array we can take a variable called max, which will store the maximum number of ones found so far, and we'll start iterating in this. We'll take two pointers, one pointer will denote the starting of the window, and the next will denote the end of the window, and once we encounter a 0 we will reset it. So how it will work is like, let's say we'll have a integer called max, which will currently we have 0. Max is the resultant and maximum number of elements. Then we'll start iterating over this array. I is less than nums dot length I plus plus, and if we see that, so we will take one more variable called current, which will store the current length of the consecutive ones. So initially, if the num size is 1, that means we have a chance of having maximum size. So we'll just increment current for now. Else what we will do, we will check if max is less than current. That means if we have found a 0 and we have a length in current, and if that length is greater than length found so far, then we will update max. So max will be current and we will reset current. I think this should work. And at the end also there is a possibility that once we end, max is not updated, so we will return maximum of these two. Or we can check if max is less than current, then max will be current and will return max. Let's run this quickly. Wrong answer. Okay. Why wrong answer? So what is it? Int max is 0, current is 0, I is running from 0 to max nums dot length. If num size is 1, then we will increment current. This is fine so far. And if we found if there is a 0, then we are coming to else block and we are checking if max is less than current, then max is current and current is 0. And at the end, if max is less than current, then max is current. What's wrong? Why? Let me see if for all ones what is happening. It's fine only.
What's wrong? Will I be able to paste it? These are all ones and no zeros. Output is this, expected is this. Why? Are there any zeros in this? There is one. Let me remove some of them, make it easier. There was one more zero somewhere here. Where is it? This guy. And remove some more. I don't know what I'm doing, but let's see. Invalid, why? अच्छा, लेकिन इनवैलिड अब क्या है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. अरे यार, क्या दिक्कत आ रही है फिर? Expected value is less than output. I don't want to see the solution. What am I missing? Then what is wrong with this? एक दो तीन चार पाँच तो ज़ीरो है इसमें, उससे पर क्या मतलब है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है.
यहाँ पे in case of else that means nums I is 0, right? nums I अगर 0 है तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको करंट को 0 करना है, राइट? और अच्छा, आई गॉट इट, करंट को बाहर 0 करेंगे ना, बिकॉज इन एनी केस करंट तो 0 होना ही चाहिए, चाहे मैक्स अपडेट हो चाहे ना हो. अरे बाप रे, गॉड, दिस इज सो डम्प. आई थिंक दैट शुड वर्क नाउ फाइनली. Okay, we'll move to next question. Next is, given a non-empty array of integer nums, every element appeared twice except for one. Find that single one. You must implement a solution with linear runtime complexity and use only constant extra space. Okay. For this brute force approach would be that we take a hash map, we store the count of each element, and then we'll iterate over the hash map and see if for which element the count is 1. That will be pretty straightforward brute force approach. But they are saying that we need to use constant space. Other than hash map, we can also, I think better would be if we use a set. And what we can do is we take a set and we start putting the elements in that set. Let's say we found a 2, so we will first check if 2 is present or not in the set. If it is not present, we'll put that element, and next we'll find again 2, we'll check if 2 is present or not. If it is present, then we'll remove that element. Then we'll check if 1 is present. It's not, then we'll put 1. So every time we'll check if the element is not present, we will put it. If it is present, we will remove it. And at the end, in the set, we will have only one element, which is the unique one. And this will also take n log n complexity, I think, for searching and all. And again, space will be order of n by 2, which is again order of n. So they are saying to do it in constant extra space. If we ignore the constraint on time complexity, because they are saying linear, if we forget about that and we just do in constant space, then it will be like that. First of all, we will sort this array, and then we will start iterating from start to end, and then we can easily find the element which is present only once. But sorting will take n log n time complexity. It is not linear time complexity. The other way of doing this would be that I think the solution will be something like adding all the elements or something of that sort. Because let's say if this is -2 and this is 2, and then one element is negative, one is positive, and when we will add them all, then rest will be will become 0, and we will only be left with the unique one. But both the elements are positive, so adding will not work. One sec, we can take the XOR of these elements. Correct. So taking XOR of the element with itself makes 0. So if we take the XOR of all the elements, then we'll be left with 4. I think that is the solution. So what I'm saying is, we'll start iterating over this array. Int I equals to 0, I is less than nums dot length length I plus plus, and we'll take a result. Int result equals to 0 initially, and then we'll take the XOR of all the elements, XOR of nums I, and at the end in the result we will have the unique element. This should work.
one thing is about these questions is that if you are not aware of these properties, if you are not aware of these theorems that taking XOR of the same element gives you 0 and things like that, I mean, if you haven't done any question similar to this before, then it's very difficult to come up with a solution. That's where practice, practice makes you perfect. So you will have to do similar questions to come up with such solutions. I had already done the XORing question before in one of the question, I don't remember exactly, but we did this. We took a XOR for all the numbers and then that gave the result. So this is similar to that. I'll submit it. Cool. Mark it as done. Next is longest subarray with given sum k positive. They don't have lead code for this. Let me search if lead code or some similar question. Subarray sum equal k. Is this not the one? Given an array of integer nums and a integer k, return the total number of subarrays whose sum equals to k. वही क्वेश्चन है ना, लॉन्ग, अच्छा इसमें लॉन्गेस्ट पूछा है और इसमें पूछा है इंटीजर के रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब एरेज हुज सम इक्वल्स टू के. टोटल पूछा है, इसमें टोटल सब एरेज निकालना है. ठीक है, यही वाला करेंगे हम. तो इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज के इज़ गिवन एज 2. तो यहाँ पे 2 सब एरेज हैं जिसका सम 2 बनता है. नाउ के इज़ गिवन एज 3. तो यहाँ पे अगेन 2 सब एरेज हैं जिसका सम 3 बनता है. ओके. इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा कि हम 2 फॉर लूप लेंगे. इनिशियली फॉर लूप एक होगा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ LNGTH बवा आई प्लस प्लस, और हम एक इनसाइड एक और फॉर लूप लेंगे, ये इज़ लेस देन नम्स डॉट LNGTH J प्लस प्लस. और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल द सब एरेज, और हर एक सब एरे का सम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर वो के बनता है तो फिर वो हम रिज़ल्ट में प्लस कर देंगे. तो एक रिज़ल्ट ले लेंगे जो इनिशियली 0 होगा. अब हम हमारा आई यहाँ है, जे यहाँ है, तो हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे और एक एक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे. ठीक है, फिर हमको पता चल जाएगा कि जब भी हमारा सम के बराबर होगा तो हम उसको रिज़ल्ट बता देंगे, मतलब हम रिज़ल्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे. जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स हो चुका है, फर्स्ट इंडेक्स ऐड हो चुका है सब एरेज में. फिर हम इसको रिमूव करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे. आई की वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ से फिर हम सारे सब एरेज निकालेंगे, सबका सम निकालेंगे, एंड सिमिलरली विल गो ऑन. इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होगा और स्पेस तो उतना ही रहेगा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है. अदर सोल्यूशन आई थिंक वुड बी टू यूज़ अ 2 पॉइंटर अप्रोच. इन दिस वी विल टेक 2 पॉइंटर्स. और ये सॉर्टेड तो नहीं है ना, सॉर्टेड नहीं है. ठीक है, और हमको ले आना है के की वैल्यू 3. तो हम क्या करेंगे कि हम दो पॉइंटर्स लेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग के लिए, एंड वी विल कीप एडिंग दी एलिमेंट्स. इनिशियली लेट्स से करंट हमारा 0 है. ठीक है, तो वी विल कीप एडिंग द एलिमेंट्स टू दिस करंट टिल वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर द सम इज इक्वल्स टू के. और ये 0 हो सकता है क्या, नम साइज 0 भी हो सकता है ना. ओके, सो टिल इट बिकम्स के हम ऐड करते रहेंगे, और के भी नेगेटिव हो सकता है. दिस कैन मेक एन इशू, क्योंकि अगर इफ़ दे आर नेगेटिव देन
विंडो मेथड काम करेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज इफ वी रिमूव एन एलिमेंट देन लेट्स सी, तो k इज़ 3 राइट. तो हम क्या करेंगे कि विल कीप एडिंग द एलिमेंट्स टिल करंट इज इक्वल्स टू k. जब तक k में रहेगा, हम k के बराबर हो जाए या उससे छोटा हो, वी विल कीप एडिंग द एलिमेंट्स. वंस इट इज़ ग्रेटर देन k, then we will increment starting pointer and we'll remove this out of the window, right? And then again we'll keep adding the elements till we have a value which is less than k. So let me try to write it. int start भी हमारा 0 होगा and int end भी हमारा 0 होगा initially. बट नेगेटिव के केस में आई एम कंसर्न बिकॉज आई डोंट थिंक इट विल वर्क in case of negative. It will not, because अगर हम नेगेटिव नंबर एक ऐड कर देते हैं इसमें, तब तो वैल्यू उससे छोटी हो जाएगी ना. अगर नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो ये तो फिर काम नहीं करेगा कभी. It will, this approach I'm saying, the 2-pointer one will work only when all the numbers are positive. So we'll have to think about something else. Basically, अच्छा, this is this question, next one. Longest subarray with given sum k positive, and the positive one I was saying. This is the next question, longest subarray with sum k. So let's do this first. Given a array, a num and an integer, find the length of longest subarray that sums to k. This is the one I was talking about. I'll do this question first. So we are already taking an integer. I'll also take the value k, enter the value of k, and then we'll take 2 pointers, int start equals to 0, int end equals to 0. We'll start iterating. End equals to 0, end is less than nums array. I'm taking array dot length and plus plus. Now also we will take more variables like int max equals to 0. Now we will check if, and we also need a sum, int sum equals to 0, int sum plus this value, sum plus array end is greater than k, then we will not add it, right? If it is greater than k, then we will not add it, and we will increment the end pointer and start pointer, right? We will increment the start pointer, and also we will subtract this value from we'll increment the start pointer, and we also subtract the value of the start sum equals to sum minus array of start. Okay, before incrementing we'll do this, right?
else if it is equal, if sum plus array end is equals to k, in such cases what we will do is we will do max plus plus, because we have got the maximum sum now. And we'll do sum equals to sum plus array end, and we will not remove start. Else what we'll do, if it is less, then we will simply do sum equals to sum plus array end. And at the end we will return sum, we'll return the max, println max. I think this should work. I don't have a way to verify it but I'll check the solutions. Brute force is we first run a loop from I to, this is same brute forces. Optimal solution is left and right. I'll check the code directly. Okay, so instead of for, they are taking while loop, they are checking 3 conditions again, and if this is this, then this. I think this should be fine. We'll move to next one. Now this one we have on lead code. Length of longest subarray with 0 sum. Given an array containing both positive and negative integers, we have to find the length. We have to find the length of the longest subarray with the sum of all elements equals to 0. Wait, all elements equals to 0, and this is all element sum equals to k. This is slightly different, but we'll do it on lead code directly. So if there are negative numbers, we cannot simply add them. That will not give us the subarray. What if at each element we find the sum till that element, something like that. Like we find what will happen if we keep that element and what will happen if we remove that element. One total number of subarrays. Okay, so one could be present in multiple subarrays. The value of num size is between -1000 and +1000. That means we can have a map on these values, or like we can iterate from 0 to 1000, or we can iterate over all the numbers in this, right? This we cannot, and we shouldn't, because this value is fixed. So if we think something in terms of that, for each value in nums, if we do some mathematics,
What if I add all the numbers, keep writing the sum till that number? So sum till 1 is 1, sum till this element is 2, sum till this element is 3. They haven't given any negative negative wala example. 1 2 3, इसमें क्या होगा? sum till here is 1, sum till here is 3, sum till here is 3 4 5 6, ऐसे. So are we going to get anything out of it? I don't think so. 6 में if we have 1, 3 तो चलो is answer, but यहाँ पे 6 जो है इसमें इस 6 को हम k बना सकते हैं. इस 6 को हमें 3 बनाने के लिए 3 माइनस करना पड़ेगा. तो हम चेक करेंगे कि क्या 3 है इसमें. अगर 3 है मतलब कि वो 3 माइनस करके हम इसको भी 3 बना सकते हैं. सिमिलरली ये जो 3 है हमको क्या बनाना है? 2 ना. तो ये 2 है, ठीक है. अब इस 3 को 2 बनाने के लिए हमें चाहिए 1. तो हमें देखना है 1 है क्या इसमें. अगर 1 है तो ये 2 बन सकता है. ऐसा कुछ कर सकते हैं ना. आई डोंट नो इफ दिस मेक सेंस. मतलब कि हम ये चेक करें कि हम के कितने तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो टोटल चाहिए. तो हम ये सारे सम बना सकते हैं. बट अगर इस 3 को हमें बनाना है 2, तो हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1. पर अगर ये 1 कहीं और हो, यहाँ पे ना हो, मतलब ये तो तभी बन रहा है ना जब हम इसका कंसेक्यूटिव माइनस करेंगे. I don't know, man. I think I should see some hints. With brute force work, try to optimize it. Can you optimize using some extra space? What about sorting some frequencies in hash table? Will it be useful? What about sorting some frequencies in hash table? हाँ यही तो. sorting some frequencies. wait. अच्छा, तो सम का ये सम की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनको अगर सॉर्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसीज़ को सॉर्ट कर दिया. फ्रीक्वेंसीज़ क्या है? सम की फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे. अच्छा, कि सम मतलब कितनी बार आ रहा है ऐसे. तो हम 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, उसको सॉर्ट कर दिया. फिर क्या? फिर माइनस करके देखेंगे. सम i0 इक्वल्स टू सम ऑफ i से 0 इज सम 0 से j माइनस सम 0 से i. क्या समझ ही नहीं आया मुझे. सम. चल एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये कह रहा है कि सम ऑफ i से j तक का जो सम है वो है 0 से i का सम माइनस. अच्छा, 0 से इस पूरे का सम माइनस इसका सम, ये वाला सम देता है. तो इससे क्या मिलेगा हमको? इस पूरे का सम हमें पता है क्योंकि हम हैश टेबल में स्टोर कर चुके हैं, और इसका भी सम हम हैश टेबल में स्टोर कर चुके हैं. तो हम इसका सम निकाल लेंगे इस पूरे में से इसको माइनस करके. तो फ्रीक्वेंसीज़ को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे.
आई थिंक व्हाट आई वाज थिंकिंग इज़ करेक्ट. इसमें हम माइनस करके चेक कर सकते हैं ना कि अगर वो डिफरेंस वाला प्रेजेंट होगा अगर मैप में, तो मतलब कि वो भी आंसर है. लेट मी ट्राई टू राइट इट डाउन. जैसे कि फॉर एक हम मैप ले लेंगे और मैप को सॉर्टेड रखना है ना, तो सॉर्टेड वाला मैप कौन सा होता है? सॉर्टेड मैप इन जावा आई थिंक देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड मैप होता है. सॉर्टेड मैप ही कहते हैं उसको. नहीं यार, जावा हैश मैप टाइप्स. हैश मैप ही ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम एक हैश मैप लेंगे. मैप ऑफ इंटीजर मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप. ठीक है. और लेंगे हम एक करंट सम इक्वल्स टू 0 और इंट मैक्स भी 0 होगा. हमारा मैक्स हमारा सम निकालेगा, है ना. जो ये टोटल नंबर ऑफ सब एरेज है वो हमारा मैक्स रहेगा. अब हम इस एरे पे ट्रेड करेंगे. इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ gth आई प्लस प्लस. और फिर हम चेक करेंगे कि एक मिनट, हम क्या कर सकते हैं, पहले करंट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं. तो करंट इक्वल्स टू करंट सम इक्वल्स टू करंट सम प्लस एरे आई. इसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ हमारा करंट सम हमारा इसके बराबर हो गया है, के बराबर, दैट मीन्स कि हमें एक तो मिल गया है सब एरे, तो हम मैक्स विल डू मैक्स प्लस प्लस, राइट. अब हम चेक करेंगे कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, जो मैंने कहा कि जैसे हमें 3 मिला है, तो अगर 3 में से अगर कुछ माइनस करते हैं, अगर वो मिल जाता है, तो फिर हमारा मतलब के को माइनस करके अगर अच्छा, तो बेसिकली हमें ये करना है ना कि अगर कुछ भी करंट है, मान लो करंट था 3 और के हमारा था 1 2, तो हमें क्या चाहिए था कि जो एग्जिस्टिंग सम्स हैं उसमें 1 होना चाहिए, तभी तो हम करंट में से 1 माइनस करके के बना पा रहे थे. तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हैश मैप में ये डिफरेंस है कि नहीं है प्रेजेंट, राइट. तो हम चेक कर लेंगे कि जो मैप है हमारा, डैट कंटेन्स दिस वैल्यू और नॉट, कंटेन्स की और दोनों का डिफरेंस. सो करंट सम माइनस के, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस प्रेजेंट है कि नहीं है. अब अगर इन दोनों का डिफरेंस प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारा रिज़ल्ट जो हमारा मैक्स होगा वो हमें एक और वो मिल गया, हमें मैक्स जो है हम वो बना सकते हैं, राइट. तो मैक्स जो होगा वो मैक्स प्लस मैप डॉट गेट करंट सम,
और हम मैक्स डॉट गेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए. वी कैन मेक दैट एलिमेंट दीज मैनी टाइम्स, so that's why we need the frequency. Current sum minus k, these many times will need the frequency. Now what next is, now we have made iterated max. Now what we will do, we'll check, we'll put the value in that prefix table. So we'll first of all we'll check if it's present or not. If map dot contains key, if it contains the key current sum, then we'll increment it. So map dot put we also need to get this value na. Int value equals to map dot get current sum, put value plus 1, current sum value plus 1 if it is present. Else, if it is present, we will do this. Else we will just update the value. So map dot put current sum and value as 1. Okay, value as 1. Or we can okay, this should be fine, let's not complicate it. So this should be fine, and at the end, after the loop is done, we can return the value of max. Return max. Let's try to run this. What happened? Array, okay, it's nums. Done. Okay, we'll mark it as closed. Next is medium section. I think we are good for today. I'll start with medium section tomorrow.